Uttarakhand is once again in the grip of a natural disaster. Back-to-back spells of heavy rain in September have triggered landslides, cloudbursts, and flash floods, causing large-scale damage across multiple districts. Shops, hotels, and homes have been washed away, roads and highways remain blocked, and thousands are struggling to rebuild their lives. On the night of September 16th, around 11 p.m., sudden flooding struck Uttarkashi. करीब ये समझ लो 11 बजे लगभग पानी काफ़ी बढ़ गया था। फिर हमारे साथ जो स्टाफ था हमने स्टाफ सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था। सामान निकालने का हमें टाइम नहीं मिल गया, अचानक पानी बढ़ गया पूरा। कितना बड़ा होटल है? ये करीब 18 से 20 कमरे हैं, 2 कमरे स्टाफ के हैं, 18 कमरे वैसे हैं। इसमें क्या पूरे कमरे पूरे खत्म हो गए, पूरे पिछले साइड से पूरा टूट गया और उसके बाद सामान सारा सब मलबा घुस गया। आपने देख ही लिया, पूरे ईंटें मलबा सब घुसा पड़ा है। बस खाली बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है, डैमेज खड़ा है, बस वो कभी भी गिर सकता है। नुकसान भाई अब क्या बताएं, अब हमने तो अपनी जिंदगी में जो बाप दादाओं की जमीन थी वो बेच बूझ के सब उसी में लगा दी, खत्म कर दिया सारा सब। Locals recall how the water rose without warning. Within minutes, hotels and shops collapsed, debris and mud surged into buildings, and rescue teams rushed to evacuate those trapped. ये है कर्ली घाट और अब इसको पार करने के लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है। Just days earlier, on September 14th and 15th, heavy rain had battered Rudraprayag and Chamoli. Landslides blocked stretches of the Kedarnath and Badrinath highways, bringing the Chardham Yatra to a halt. Villages upstream reported homes, farmland, and markets swept away. Traders counted their losses in lakhs. One shopkeeper stood outside the remains of his business and said, पूरी तरह से बर्बाद हो गई, कोई वही नहीं है, दोबारा उठने की कोई वही नहीं, बहुत पूरी जीवन भर की कमाई चलेगी। सर हम कोशिश तो करेंगे, हम व्यापारी हैं, हमें तो कंटिन्यू रखना ही है जो हमारा काम है, बट हम ये चाहते हैं अगर गवर्नमेंट हमारी इसमें थोड़ी रिस्टोरेशन में हेल्प करे थोड़ा, तो हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की साइड से। हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं आए हैं और आप जैसा देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। Earlier in the week, on September 12th, incessant downpours had already forced authorities to suspend travel on pilgrimage routes. Pilgrims were stranded as debris blocked highways and the administration scrambled to clear roads and move people to safer locations. Relief measures are now underway. Prime Minister Narendra Modi has announced an immediate release of funds from the Prime Minister's Relief Fund to support rescue and rehabilitation. The state government has deployed disaster response teams while the army continues to clear blocked roads and assist with evacuations. One resident watching soldiers at work summed up the situation simply. Officials say the full scale of the damage is still being assessed, but early estimates suggest losses running into several hundred crores, with hotels, shops, and homes destroyed across the worst affected districts. From disrupted pilgrimage routes to washed out highways and collapsing markets, the rains have once again exposed the vulnerability of Uttarakhand's mountain towns to extreme weather. For families and traders, the challenge now is survival and restoration. Back-to-back rains in September have left behind not just damaged infrastructure, but also deep uncertainty for residents. Relief funds and rescue operations are underway, but rebuilding homes, businesses, and entire communities in Uttarakhand will take time, resources, and sustained support.